வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்று நாம் ட்ரம்ப் ஏன் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காங்க அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அமெரிக்கா நாட்டு பிரசிடென்ட் இந்தியாவுக்கு வருது. இது ஒன்றும் புதுசு கிடையாது. இந்த நிகழ்ச்சிகள் பல தடவை நடந்திருக்கு. இந்தியாவுக்கு வந்த ஃபர்ஸ்ட் அமெரிக்க நாட்டு பிரசிடென்ட் டிவைட் டி என்ஸ்ஹவர்ட். இவங்க அமெரிக்காவுக்கு 34th பிரசிடென்ட். இவங்களுக்கு அடுத்தது ரிச்சர்ட் நிக்சன் 37th அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட். இவங்களும் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காங்க. ஜிம்மி கார்ட்டர் 39th பிரசிடென்ட். பில் கிளின்டன் 42nd பிரசிடென்ட். ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ் 43rd பிரசிடென்ட். பாரக் ஒபாமா 44th பிரசிடென்ட். இவங்க எல்லாருமே இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காங்க. அந்த வரிசையில் இப்போது டொனால்ட் ஜான் ட்ரம்ப் 45th பிரசிடென்ட் ஆஃப் அமெரிக்கா. நம்ம இப்போ டொனால்ட் ட்ரம்ப் எப்படி அமெரிக்கா நாட்டு பிரசிடென்ட் ஆனாங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போம். ட்ரம்ப் அவங்களோட ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் ரியல் எஸ்டேட், அந்த பிஸ்னஸ் தான் டொனால்ட் ட்ரம்ப்பும் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. 1971 அந்த பிஸ்னஸ்க்கு ட்ரம்ப் ஆர்கனைசேஷன் என்று பேர் மாற்றினாங்க. அதில் வர்ற வருமானத்தை வச்சு இவங்க பெரிய பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டினாங்க, ஹோட்டல்ஸ் கட்டினாங்க, கேசினோ கிளப்ஸ் கட்டினாங்க, கல்ஃப் கோர்ஸ் கட்டினாங்க. இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே பெயர் ட்ரம்ப். அது மட்டும் இல்லை, இவங்க மிஸ் யூனிவர்ஸ், மிஸ் யூஎஸ்ஏ என்ற பட்டத்தை வாங்கியிருக்காங்க. இவங்க நிறைய ரியாலிட்டி ஷோஸ்க்கு ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்தது நிறைய டிவி ஷோஸ்க்கு ப்ரொடியூசராக இருந்திருக்காங்க. இன் 2016 அமெரிக்கா நாட்டில் பிரசிடெண்ட்டுக்கான எலெக்ஷன் நடக்குது. அதில் மொத்தம் 17 கேண்டிடேட்ஸ் கலந்துக்கிறாங்க. அதில் கலந்துக்கிட்ட 16 பேரையும் டிஃபீட் பண்ணி பெரிய அளவில் வெற்றி பெறுகிறாங்க. டொனால்ட் ஜான் ட்ரம்ப் இப்போ வரைக்கும் அமெரிக்கா நாட்டு பிரசிடெண்ட். இவங்க இந்தியாவுக்கு தனியாக ஆளாக வரல. இவங்க இவங்களோட 3rd ஒய்ஃப் அண்ட் அவங்களோட மகளையும் கூட்டிகிட்டு தான் வந்திருக்காங்க. டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவங்க வந்த ஃப்ளைட் இந்தியாவில் லேண்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே இவங்க போகக்கூடிய கார் அண்டு பாடி கார்ட்ஸ் எல்லாருமே இந்தியாவுக்கு வந்துட்டாங்க. இவங்க காந்தி வாழ்ந்த ஆசிரமத்தை பார்க்குறதுக்கும், வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் அதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காகவும், தாஜ்மஹாலை சுற்றி பார்க்குறதுக்கும் இந்தியா நாடும் அமெரிக்கா நாடும் பல ஒப்பந்தங்கள் செய்கிறதுக்காகவும் டொனால்ட் ட்ரம்ப் அண்ட் ஹிஸ் ஃபேமிலி 2 நாள் இந்தியாவில் தான் ஸ்டே பண்ண போகிறாங்க. டொனால்ட் ட்ரம்ப் அண்ட் ஹிஸ் ஃபேமிலி இவங்களுக்காக இந்தியா நாடு எவ்வளோ ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு, ஸ்டேடியத்தில் என்ன பேசியிருக்காங்க, காந்தி ஆசிரமத்தில் என்ன பண்ணாங்க, எல்லாத்தையும் வீடியோவாக பாருங்கள். வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். That are so colorful, so warm and so welcoming. The blowing of the conch shells is considered auspicious, pious, and the sound there positively energizes the environment through the vibrations. There is such a festive air here. It is as if all of India has come alive to welcome her guests. And this sort of a greeting, this sort of a reception can only be given in India. And after being greeted here at the Sardar Vallabhbhai Patel International Airport, the American President, the First Lady, will now proceed towards Sabarmati Ashram. But what will await them on the route, Jasleen, is also going to be fantastic. The cultural extravaganza, music, dance, arts, crafts await the arrival of the dignitaries on the route as the culture of
28 states of the country will be showcased. So, on this short route, President Trump and the First Lady will experience the sights, the sounds, the colors, the culture of all of India on this short journey. This is indeed a riot of color as artists of all ages, young and old, men and women dance in gay abandon. And these are 7 or 9 pots that they balance on their heads, which is quite a feat. These are aged To celebrate the seasons, to celebrate the change of seasons, to celebrate the advent of the new season. Because they are all connected with nature, and as nature changes slowly through the year, so do our folk dances, and we celebrate nature in all its glory. The president's limousine, the Beast, now slowly moving out of the airport. Modi has now arrived at Sabarmati Ashram, and en route we did see that the distinguished guests were greeted by tens of thousands of people and artists showcasing art from different states and union territories. The beautiful Sabarmati river, and on the banks of it, Sabarmati Ashram, and this is the place which is called Hriday Kunj, where Gandhiji lived for nearly 13 years. Honorable Prime Minister Narendra Modi being welcomed at Sabarmati Ashram. Deep connect with the people. Martin Luther King was inspired by Gandhiji's philosophy of truth and non-violence as powerful tools during the civil rights movement in America. He said, when I go to other countries, I go as a tourist, but when I come to India, I come as a pilgrim. And this is the entrance to the Sabarmati Ashram. It has been preserved as it was during Gandhiji's time. Prime Minister Shri Narendra Modi ji will receive President Donald Trump and the First Lady Melania Trump. A traditional welcome with a khadi angavastra or a stole. The significance being explained here to the President and the First Lady. And this is Hriday Kunj. This is where Mahatma Gandhi stayed during his
13 odd years here at Sabarmati. His presence is still palpable here. There is a deep sense of peace that permeates the air. His words still vibrate in the stillness here. The President will experience the essence of spiritual India as he enters this hallowed space. President Donald Trump and Prime Minister Modi garlanding the photo of Mahatma Gandhi ji there, and we do see a prayer written downstairs. The prayer was written by Mahatma Gandhi in English, and it was titled Lord of Humility, where he expressed, let us be embodiments of self-sacrifice, embodiments of godliness, humility personified, that we may know the land better and love it more. This is the meeting place where Gandhiji used to meet a lot of people. Interestingly, although Gandhiji lived here for 13 years, he didn't have a room to himself. He spent most of his time in this veranda, spinning the charkha, or the spinning wheel, as we can see in the visuals. And that little room on the left was his study, where he wrote letters every day to people all across India who were connected with the freedom movement, and people from all across the world who wrote to him. This is also where he met the leaders of the freedom movement and international guests. This is where various decisions regarding India's freedom It struggle was while living here that Mohandas Gandhi came to be known as Mahatma Gandhi. And this is the symbol of self-reliance, the spinning wheel, charkha. The charkha was Gandhiji's great tool for empowerment and dignity of labor. President Trump and the First Lady giving it a try. It also has great spiritual significance. Gandhiji used to say 1 hour spent in spinning would be equivalent to an hour in self-development for the spinner. It's very meditative when you spin the charkha. Lata Ben explaining how the yarn is spun. For most people, trying the charkha for the first time, it can be a little unnerving, but once you get used to it, you understand what Gandhiji meant when he called it the physical embodiment of his constructive program as a representation of Swadeshi, self-sufficiency, and at the same time, interdependence, because the wheel is at the center of a network of cotton growers, carders, weavers, distributors, and users. It also embodied the dignity of labor, equality, unity, as all volunteers were to spin each day, and finally independence was achieved.
In fact, it has been called the livery of our freedom. That is what Khadi signifies for us. A few moments of introspection, trying to absorb the essence of Mahatma Gandhi, his teachings, and his philosophy. It's hard to imagine, but this is exactly how the Mahatma would have sat here with his international visitors. He too had a great sense of humor. Interestingly, Gandhiji could write from both his hands. And sitting here in the veranda, he would meet a lot of world leaders and other guests, as we now see the special visitor today, the American President, Donald Trump, now penning his thoughts in the visitor's book. Foremost in the movements launched by Gandhiji from this very place, the Sabarmati Ashram, was the 385-kilometer Salt March from Sabarmati Ashram to Dandi on the south Gujarat coast. Interestingly, Gandhi Smarak Sangrahalaya, Sabarmati, is open on all days of the year, from 8:30 in the morning till 6:30 in the evening. Daily about 2,000 to 3,000 footfalls, and on a holiday, Sunday, weekend, that increases to about 5,000 footfalls. Mahatma Gandhi believed in an openness. He used to say, I do not want my house to be walled on all sides and my windows to be stuffed. I want the cultures of all lands to be blown about my house as freely as possible. But I refuse to be blown off my feet by any. This perhaps is the openness that he talked about. The people of all cultures, all traditions came here. The three monkeys of Mahatma Gandhi: speak no evil, see no evil, hear no evil. These were originally given to Mahatma Gandhi by a Japanese monk, and they became an essential part of his philosophy. And those philosophies, Jasleen, are still very relevant and encourage each one of us to ensure that we imbibe the core values of humanity, truth, non-violence, love, compassion, service, sacrifice, forbearance, and equality. The Sangrahalaya, the museum, consists of a gallery that is titled My Life is My Message. And it consists of paintings, photo enlargements of some of the vivid events of Gandhiji's life, his quotations, letters, other relics. There's a library too. And Prime Minister Narendra Modi encourages one and all, especially the youth, to understand Gandhiji, his philosophy, connect with history. There's the archives that ensures collection, preservation, and display of Gandhiji's writings, photography, voice records, films, personal belongings. As we now see President Donald Trump interacting with the members of the Gandhi Smarak Sangrahalaya, Sabarmati.
So these were few moments of reflection, of going inwards before moving onwards towards the next leg. Mahatma Gandhi said that to find oneself, one has to lose oneself in the service of others. And this is a pilgrimage where one can find this philosophy and through it find oneself. And now from the Sabarmati Ashram, the cavalcade will move to the new Motera Stadium. And for today, perhaps Motera is all set to transform into the loudest stadium in the world. That is quite true. We've been hearing loud cheers emanating from the stadium. The President's daughter, Ivanka Trump. Gandhiji believed in the concept of living in a commune with just the bare necessities, because he said that nature gives you enough for your needs, though not enough for your greed. And this was the ideal living conditions that Gandhiji talked about. The residents here, At Sabarmati Ashram, or the loudest cheer that awaits at the Motera. It's an array of emotions that engulfs the life of a human being. come to think of it, that is the essence of India, isn't it? We are the loudest and the most joyful when we celebrate our festivals with great color and a lot of music and dancing. And yet, when it comes to moments of reflection, we turn inwards. This is a part of life for most Indians. Despite the compulsions of modern day living, Trump Also, the And- First Lady, Melania Trump, has signed there. exactly. People do usually come here and pen their thoughts in the visitor's book. And this will be a wonderful visit for the president. Media, and especially on Twitter. They are the leaders of the world's largest and oldest democracies. They draw enormous crowds at their rallies and other public events. They both rose to power as leaders of the masses. And they will have a lot to talk about when President Donald Trump visits India for the first time. Trade, strategic ties, security, defense deals, and enhancing people-to-people connect are just a few topics on the agenda. The US market has been the single largest market for Indian exporters. For expectations of a mini trade deal, because it's important for India. Defense deals will definitely be on the table, including perhaps for helicopters, and there's talk because the US has sent to the Congress the notification for authorization of sale of integrated air defense systems. The two leaders may find they have much in common if they venture into the world of social media. Both are prolific users of social networking sites. Donald Trump is the most popular head of state or government with 72.6 million followers on Twitter, while Prime Minister Modi is at number 2. The World Heritage City will also be one of the venues. So all of these spectators will also get to see some football. Ivanka Trump, meanwhile,
happily posing for the photographs. These will be memories she will also cherish for lifetime, because India is a land known for hospitality, diverse culture, rich heritage. And in today's day and age, with the largest number Indo-US friendship. The President of the USA will address the audience here. They are very keen to hear the American President Donald Trump, also Prime Minister Narendra Modi. As we now see Prime Minister Narendra Modi being welcomed by a loud cheer, and President Donald Trump shaking hands, a warm hug, symbolizing the great Indo-American friendship. The aim is to strengthen and deepen the ties further, as we see the First Lady of the United States of America and both the global leaders reciprocating to the cheers by the spectators. एक ऐतिहासिक घटना आज मोटेरा के इस विशाल स्टेडियम में जिसके साक्षी हम बने हैं। मैत्री का ये संदेश ऑफ गुडविल एंड किनशिप We now request you all to rise for the national anthems. We now invite the dynamic, dedicated and determined architect of New India, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, for his welcome remarks.
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। मैं कहूंगा इंडिया यूएस फ्रेंडशिप, यूएस फ्रेंडशिप। आप बोलेंगे लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। इंडिया यूएसए फ्रेंडशिप, यूएसए फ्रेंडशिप, इंडिया यूएस फ्रेंडशिप, इंडिया यूएस फ्रेंडशिप। नमस्ते। आज मोटेरा स्टेडियम में एक नया इतिहास बन रहा है। आज हम इतिहास को दोहराते हुए भी देख रहे हैं। 5 महीने पहले मैंने अपनी अमेरिका यात्रा की शुरुआत ह्यूस्टन में हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम से की थी और आज मेरे दोस्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी ऐतिहासिक भारत यात्रा का आरंभ अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप से कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, वो अमेरिका से सीधे यहां पहुंचे हैं। इतनी लंबी जर्नी के बाद भारत में उतरते ही प्रेसिडेंट ट्रंप और उनका परिवार सीधे साबरमती आश्रम गया और फिर इस कार्यक्रम में आया है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। ये धरती गुजरात की है, लेकिन आपके स्वागत के लिए जोश पूरे हिंदुस्तान का है। ये उत्साह, ये आसमान तक गूंजती आवाज, ये पूरा वातावरण एयरपोर्ट से लेकर के यहां स्टेडियम तक हर तरफ भारत की विविधताओं के रंग ही रंगा हुआ नजर आ रहा है। और इन सब के बीच प्रेसिडेंट ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप, इवाका और जेरेड की उपस्थिति, प्रेसिडेंट ट्रंप का अपने परिवार के साथ यहां आना भारत अमेरिका रिश्तों को एक परिवार जैसी मिठास और घनिष्ठता की पहचान दे रहा है। इंडिया यूएसए रिलेशंस आर नो लॉन्गर just another partnership. It is a far greater and closer relationship. इस कार्यक्रम का जो नाम है नमस्ते, उसका मतलब भी बहुत गहरा है। ये दुनिया की प्राचीनतम भाषाओं में से एक संस्कृत का शब्द है। इसका भाव है कि सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं, उसके भीतर व्याप्त डिविनिटी को भी हम नमन करते हैं। इतने भव्य समारोह के लिए मैं गुजरात के लोगों का, गुजरात में रहने वाले अन्य राज्य के लोगों का अभिनंदन करता हूं। मिस्टर प्रेसिडेंट, फ्रेंड्स,
आज आप उस भूमि पर है जहां 5000 साल पुराना प्लांट सिटी धौलावीरा रहा है और इतना ही पुराना लोथल सी पोर्ट भी रहा है। आज आप उस साबरमती नदी के तट पर है जिसका भारत की आजादी में अहम स्थान रहा है। आज आप विविधता से भरे उस भारत में हैं जहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, सैकड़ों तरह के परिधान हैं, सैकड़ों तरह के खान पान है, अनेकों पंथ और समुदाय है। हमारी ये रिच डाइवर्सिटी में यूनिटी और यूनिटी की वाइब्रेंसी भारत और अमेरिका के बीच मजबूत रिश्ते का बहुत बड़ा आधार है। एक लैंड ऑफ द फ्री है तो दूसरा पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। एक को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर गर्व है तो दूसरे को दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का गौरव है। देयर इज सो मच that we share, shared values and ideals, shared spirit of enterprise and innovation, shared opportunities and challenges, shared hopes and aspirations. मुझे खुशी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की लीडरशिप में भारत और अमेरिका की फ्रेंडशिप और अधिक गहरी हुई है और इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप की ये यात्रा भारत और अमेरिका के संबंधों का नया अध्याय है। एक ऐसा अध्याय जो अमेरिका और भारत के लोगों को प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी का नया दस्तावेज बनेगा। फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत बड़ा सोचते हैं और अमेरिकन ड्रीम को साकार करने के लिए उन्होंने जो कुछ किया है दुनिया उसे भली भांति परिचित है। आज हम पूरे ट्रंप परिवार का विशेष अभिनंदन करते हैं। फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप, आपका यहां होना हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। हेल्दी और हैप्पी अमेरिका के लिए आपने जो किया है उसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। समाज में बच्चों के लिए आप जो कर रही हैं वो प्रशंसनीय है। आप कहती हैं बी बेस्ट। आपने अनुभव किया होगा कि आज के स्वागत समारोह में भी लोगों की यही भावना प्रकट होती है। इवांका 2 वर्ष पहले आप भारत आई थी, तब आपने कहा था कि मैं दोबारा भारत आना चाहूंगी। मुझे खुशी है कि आज आप फिर से हमारे बीच में हैं। आपका स्वागत है। जैरेड, आपकी विशेषता है कि आप लाइमलाइट से दूर रहते हैं, लेकिन आप जो काम करते हैं उसका प्रभाव बहुत होता है, उसके दूरगामी परिणाम निकलते हैं। जब भी आपसे मिलने का मौका मिला तो आपने अपने भारतीय दोस्तों की भरपूर चर्चा भी करते रहते हैं। आपसे मिलकर, आज आपको यहां देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। साथियों, आज इस मंच से
हर भारतीय और अमेरिका के साथ ही पूरी दुनिया प्रेसिडेंट ट्रंप को सुनना चाहती है। उनके संबोधन के बाद मैं उन्हें धन्यवाद देते हुए आपसे और भी कुछ बातें जरूर करूंगा। मैं 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप को निमंत्रित करता हूं। फ्रेंड्स, आई प्रेजेंट टू यू माय फ्रेंड, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump। हम सब खड़े होकर के नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। Namaste. Namaste. And hello to India. This is such a great honor. Let me begin by expressing my profound gratitude to an exceptional leader, a great champion of India, a man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. The First Lady and I have just traveled 8,000 miles around the globe to deliver a message to every citizen across this nation. America loves India, America respects India, and America will always be faithful and loyal friends to the Indian people. 5 months ago, the United States welcomed your great Prime Minister at a giant football stadium in Texas. And today, India welcomes us at the world's largest cricket stadium right here in Ahmedabad. It is a profound honor to be the beautiful new stadium, to be here with you. Motera Stadium, so beautiful, and joined by so many distinguished guests from all across your nation and all across the world. To the hundreds of thousands of everyday citizens who come out and line the streets in a stunning display of Indian culture and kindness, and to the 125,000 people in this great stadium today, thank you for the spectacular welcome to your magnificent country. You have done a great honor to the American people. Melania, my family, we will always remember this remarkable hospitality. We will remember it forever. From this day on, India will always hold a very special place in our hearts. The life of Prime Minister Modi underscores the limitless promise of this great nation. He started out by his father's side as a chiwala, a tea seller. When he was a young man, he worked at a cafeteria in this city. Stand up. Everybody loves him, but I will tell you this, he's very tough. Today, Prime Minister Modi is the tremendously successful leader of this vast Indian Republic. Last year, more than 600 million people went to the polls and gave him a landslide victory like no other
in the largest democratic election ever held anywhere on the face of the earth. Prime Minister Modi, you are not just the pride of Gujarat. You are living proof that with hard work and devotion, Indians can accomplish anything, anything at all, anything they want. The Prime Minister has a moving story of an incredible rise, and so does this entire nation. Your nation is doing so well. We are very, very proud of India. The story of the Indian nation is a tale of astounding progress, a miracle of democracy, extraordinary diversity, and above all, a strong and noble people. India gives hope to all of humanity. In just 70 years, India has become an economic giant, the largest democracy ever to exist, and one of the most amazing nations anywhere in the world. Since the turn of the century, India's economy has grown more than 6 times in size. In a single decade, India has lifted over 270 million people out of poverty. Under Prime Minister Modi, for the first time in history, every village in India now has access to electricity. 320 million people, more Indians, are right now connected to the internet. The pace of highway construction has more than doubled. Over 70 million more households, think of this, 70 million more households have access to cooking fuel. 600 million more people have access to basic sanitation. And incredibly, 12 Indian citizens are lifted out of extreme poverty every single minute of every single day. India will soon be the home of the biggest middle class anywhere in the world, and within less than 10 years, extreme poverty in your country is projected to completely disappear. The potential for India is absolutely incredible. India's rise as a prosperous and independent nation is an example to every nation all over the world, and one of the most outstanding achievements of our century. It is all the more inspiring because you have done it as a democratic country. You have done it as a peaceful country. You have done it as a tolerant country. And you have done it as a great free country. There is all the difference in the world between a nation that seeks power through coercion, intimidation, and aggression, and a nation that rises by setting its people free and unleashing them to chase their dreams, and that is India. This is why India's accomplishment over the last 70 years is completely unrivaled no matter where you go. It is your faith in the strength of a free society, your confidence in your own people, your trust in your own citizens, and your respect for the dignity of every person that makes the United States and India such a natural, beautiful, enduring friendship. While our nations have many differences, they are both defined and propelled by a fundamental truth, the truth that all of us are blessed with divine light and every person is endowed with a sacred soul.
As the great religious teacher Swami Vivekananda once said, the moment I stand in reverence before every human being and see God in him, that moment I am free. In America and in India, we know that we are all born for a higher purpose, to reach toward our fullest potential, to work toward excellence and perfection, and to give all glory to God. Powered by this spirit, Indians and Americans are always striving to be greater. Our people are always seeking to be better. And so our nations have become thriving centers of culture and commerce and civilization, giving light and vitality to all of the world. This is the country that produces nearly 2,000 movies a year from the hub of genius and creativity known as Bollywood. All over the planet, people take great joy in scenes of Bhangra, music, dance, romance, and drama, and classic Indian films like DDLJ and Showjay. This is the country where your people cheer on some of the world's greatest cricket players, from Sachin Tendulkar to Virat Kohli, the greatest in the world. This is the country that built the tallest statue on the face of the earth to honor the namesake of this stadium, the great Indian patriot and native of this state, Sardar Patel. India is the country where hundreds of millions of light candles to celebrate the triumph of good over evil at Diwali. And it's where, just days from now, Indians of all faiths will pour out onto the streets to celebrate the beautiful festival of Holi. India is a country that proudly embraces freedom, liberty, individual rights, the rule of law, and the dignity of every human being. Your nation has always been admired around the earth as the place where millions upon millions of Hindus and Muslims and Sikhs and Jains, Buddhists, Christians, and Jews worship side by side in harmony. Where you speak more than 100 languages and come from more than 24 states, yet you have always stood strong as one great Indian nation. Your unity is an inspiration to the world. In America, we have come to know the splendor of Indian culture personally through the 4 million Indian Americans living in the United States as our wonderful friends, colleagues, and neighbors. They are truly spectacular people. Indian Americans enrich every aspect of our national life. They are titans of business, the biggest, the best, pioneers of science, masters of the art, and innovation of technology like few people have been able to see, no matter where you go, anywhere in this universe. Nearly 1 in 4 Indian Americans trace their roots right here in Gujarat. Gujarat is a special place. So on behalf of the entire American people, thank you, and thank you all for the contributions your culture and traditions have made to my beloved country. Americans are eager to strengthen these beautiful ties between our two people. This is truly an exciting time in the United States. Our economy is booming like never before. Our people are prospering and spirits are soaring.
There is tremendous love, tremendous we like and we love everybody. Unemployment has hit historic lows, and small business confidence has hit an all-time record high in the history of our country. Our military has been completely rebuilt. It is now stronger than ever before, and we are quickly revitalizing our alliances and friendships all around the world. We have spent $2.5 trillion on rebuilding our military. It's the most powerful military anywhere in the world by far. That is why I have come here to India in the spirit of fondness and goodwill to expand our cherished partnership of incredible power and potential. The First Lady and I have just had a pleasure of visiting Mahatma Gandhi's ashram a few miles from here, where he launched the famous Salt March. And tomorrow in Delhi, we will lay a wreath, plant a tree at Rajghat in honor of this leader who is revered all around the world. And the First Lady and I look forward to visiting one of your country's most iconic landmarks. We are later today going to see the majestic Taj Mahal. The Prime Minister and I will also continue our important discussions about how to deepen the relationship between our two great countries. Both of us understand that when leaders put the interests of their own citizens first, we can forge strong and fair partnerships to build a safer and more prosperous world. Just months ago, this critical partnership took a major step forward when the U.S. military and your brave Indian Armed Forces conducted the first ever air, land, and sea military exercises between our two countries. It was something to behold. We called it Tiger Triumph. As we continue to build our defense cooperation, the United States looks forward to providing India with some of the best and most feared military equipment on the planet. We make the greatest weapons ever made: airplanes, missiles, rockets, ships. We make the best, and we're dealing now with India. But this includes advanced air defense systems and armed and unarmed aerial vehicles. And I am pleased to announce that tomorrow our representatives will sign deals to sell over $3 billion in the absolute finest state-of-the-art military helicopters and other equipment to the Indian Armed Forces. I believe that the United States should be India's premier defense partner, and that's the way it's working out. Together, we will defend our sovereignty, security, and protect a free and open Indo-Pacific region for our children and for many, many generations to come. The United States and India are also firmly united in our ironclad resolve to defend our citizens from the threat of radical Islamic terrorism. Both of our countries have been hurt by the pain and turmoil of terrorism and that terrorism brings. Under my administration, we unleashed the full power of the American military on bloodthirsty killers of ISIS in Iraq and in Syria. Today, the ISIS territorial caliphate has been 100% destroyed, and the monster known as al-Baghdadi, the founder and leader of ISIS, is dead. In the United States, we have also made clear that while our country will always welcome newcomers who share our values and love our people, our borders will always be closed to terrorists and terrorism and to any form of extremism.
That is why we have taken historic steps to improve screening and vetting of applications for entry, and we are working to ensure that anyone who threatens the security of our citizens is denied admission and will pay a very, very big, costly price. Every nation has the right to secure and controlled borders. The United States and India are committed to working together to stop terrorists and to fight their ideology. For this reason, since taking office, my administration is working in a very positive way with Pakistan to crack down on the terrorist organizations and militants that operate on the Pakistani border. Our relationship with Pakistan is a very good one. Thanks to these efforts, we are beginning to see signs of big progress with Pakistan, and we are hopeful for reduced tensions, greater stability, and the future of harmony for all of the nations of South Asia. India has an important leadership role to play in shaping a better future as you take on greater responsibility for solving problems and promoting peace throughout this incredible region. Over the course of my visit, Prime Minister Modi and I will also discuss our efforts to expand the economic ties between our two countries. We will be making very, very major, among the biggest ever made, trade deals. We are in the early stages of discussion for an incredible trade agreement to reduce barriers of investment between the United States and India. And I am optimistic that working together, the Prime Minister and I can reach a fantastic deal that's good and even great for both of our countries. Except that he's a very tough negotiator. Since my inauguration, commerce between our two nations has increased by more than 40%. India is now a major market for American exports, and the United States is India's largest export market. A booming America is a great thing for India, and it's great for the world. And that's why we're so happy to announce that we have had the greatest economy ever in the history of the United States. In America, we have proven that the best way to attract jobs and opportunity is to reduce burdens on business, knock down barriers to new investment, and eliminate unnecessary bureaucracy, red tape, regulation, and taxes. Prime Minister Modi has already made significant reforms here in your country, as you very well know. The world looks forward to even more rapid improvement to India's business climate under his leadership. He wants to do it, and he's doing it at a record pace. 2 years ago, Prime Minister Modi warmly welcomed my daughter Ivanka to the Global Entrepreneurship Summit in Hyderabad, and she is back with us today. Ivanka, thank you. Thank you for being here. We are delighted to be joined as well by dozens of Indian women entrepreneurs who are helping to build your nation's future. They are great and natural entrepreneurs, and I just say to the men, be very careful. They're really good. The United States and India are also working closely together on the future of space exploration. You are making impressive strides with your exciting Chandrayaan lunar program. It is moving along rapidly, far ahead of schedule, and America looks forward to expanding our space cooperation with India. As you push even further, you are pushing the limits, and that's a great thing, including in the realm of human spaceflight.
The United States and India will be friends and partners on our voyage into the stars and into space. It is truly extraordinary what this nation has achieved in the span of just one lifetime, and what they have done under the leadership of Prime Minister Modi. It is absolutely incredible. Mr. Prime Minister, congratulations. You have come so far, but it is nothing compared to with how far India will go into the future, and the Prime Minister is laying the foundations for a future like few other countries can even think of. This nation is blessed with many treasures, from the sacred banks of the Ganges to the Golden Temple and the Jama Masjid. It is the home to some of the most cherished cultural heritage anywhere on earth. It is also the land of stunning vistas and astounding natural wonders, from the rugged peaks of the Himalayas to the splendid shores of Goa. And India has always been a wellspring of deep wisdom and great ideas, from the Vestas and the ancient epics all the way to the modern India nation. But standing before all of you today, I know that true strength of India is not found in its textbooks, its landmarks, or its landscapes. The true strength of India is found in 125,000 beating hearts in this stadium, and the millions and millions of people who have seen and witnessed our great friendship and admiration today. It is all found in the soul and the spirit of the Indian people. Your courage won and secured this nation's independence. Your devotion built this great and enduring democracy. And it is your dreams that will power this country to a future, even greater progress, prosperity, equality, and opportunity for every citizen across your land. So today I say to every Indian, North and South, Hindu and Muslim, Jewish and Christian, rich and poor, young and old, take pride in the glories of your past. Unite for an even brighter future. And let our two nations always stand together as powerful defenders of peace and liberty and the hope of a better world for all of humanity. Thank you again, Prime Minister Modi, for your hospitality, and thank you, India, for this phenomenal welcome. I want to just leave by saying, God bless India, God bless the United States of America. We love you, India, very much. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. President. आपने अभी जो भारत के बारे में कहा, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और सरदार पटेल को श्रद्धापूर्वक याद किया। भारत के लोगों के सामर्थ्य, उपलब्धियां और संस्कृति के बारे में कहा। मेरे बारे में भी बहुत कुछ कहा। मैं इसके लिए प्रत्येक भारतवासी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने न सिर्फ भारत का गौरव बढ़ाया है, बल्कि अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को भी सम्मान दिया है। मिस्टर प्रेसिडेंट, जहां से आपने भारतीयों को संबोधित किया है, वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। खेल संबंधित कुछ सुविधाएं यहां अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिर भी आपका यहां आना खेल जगत से जुड़े हर व्यक्ति को भी उत्साहित करेगा। मैं गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने
ये शानदार वेन्यू इस कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराया। हो सकता है इससे उनके कंप्लीशन टाइम टेबल में कुछ परिवर्तन आया हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो इसे मेकअप कर लेंगे। साथियों, दो व्यक्ति हो या दो देशों के संबंध, उसका सबसे बड़ा आधार होता है विश्वास, एक दूसरे पर ट्रस्ट। हमारे यहां कहा भी गया है, तन्मित्रम यत्र विश्वासः, यानी फ्रेंडशिप इज वेयर ट्रस्ट इज अनशेकेबल। पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच विश्वास जिस नई ऊंचाई पर पहुंचा है, जितना मजबूत हुआ है, वह ऐतिहासिक है। अमेरिका की अपनी यात्राओं में मैंने इस विश्वास को दिनों दिन मजबूत होते देखा है। मुझे याद है जब मैं वॉशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप से पहली बार मिला था, तो उन्होंने मुझे कहा था, इंडिया हैज ए ट्रू फ्रेंड इन द व्हाइट हाउस। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत के प्रति अपने इस विशेष प्यार को हमेशा प्रदर्शित किया है। जैसा आपने जिक्र किया, जब व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई जाती है तो अमेरिका में रहने वाले 40 लाख भारतीय भी अमेरिका की समृद्धि और प्रगति के सहयात्री होने पर गर्व महसूस करते हैं। साथियों, अमेरिका की तरह ही आज भारत में भी परिवर्तन के लिए अभूतपूर्व अधीरता है। आज 130 करोड़ भारतवासी मिलकर न्यू इंडिया का निर्माण कर रहे हैं। हमारी युवा शक्ति एस्पिरेशन से भरी पड़ी हुई है। बड़े लक्ष्य रखना, उन्हें प्राप्त करना आज न्यू इंडिया की पहचान बन रहा है। आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम ही नहीं है, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम भी चला रहा है। आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क ही नहीं बनता, लेकिन आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सैनिटेशन प्रोग्राम भी चल रहा है। आज भारत एक साथ सबसे ज्यादा सैटेलाइट भेजने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ही नहीं बनाता रहा, आज भारत सबसे तेज फाइनेंशियल इंक्लूजन करके भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। 21वीं सदी में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर सोशल सेक्टर, हम ग्लोबल बेंचमार्क को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बीते कुछ समय में भारत ने न सिर्फ 1500 पुराने कानून खत्म किए हैं, बल्कि समाज को सशक्त करने के लिए नए कानून भी बनाए हैं। ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए अधिकार हो, 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं का सम्मान हो, दिव्यांग जनों को प्राथमिकता देना हो, महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान 26 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव का प्रावधान हो, ऐसे कई अधिकार हमने समाज में अलग अलग वर्गों के लिए सुनिश्चित किए हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि भारत में हो रहे इन परिवर्तनों के बीच आज अमेरिका भारत का एक भरोसेमंद पार्टनर बना है। आज जो देश भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, तो वो देश है अमेरिका। आज भारत की सेनाएं जिस देश के साथ सबसे ज्यादा युद्ध अभ्यास कर रही है, तो वो देश है अमेरिका। आज जिस देश के साथ भारत की सबसे व्यापक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप है, तो वो देश है अमेरिका। आज चाहे डिफेंस हो, एनर्जी सेक्टर हो, हेल्थ हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, हर क्षेत्र में हमारी रिलेशनशिप का दायरा निरंतर बढ़ रहा है। साथियों, 21वीं सदी के इस दशक में न्यू इंडिया रिसर्जेंट अमेरिका के लिए भी
अनेक नई संभावनाएं, अनेक नए अवसर लेकर के आया है। विकास के हर क्षेत्र में दोनों ही देशों के पास पाने के लिए बहुत कुछ है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होना अमेरिका के लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। इंडस्ट्री 4.0 के इस दौर में भारत में डिजिटल इकोनॉमी का विस्तार अमेरिका के लिए भी निवेश के अनेक मौके बनाएगा। मिस्टर प्रेसिडेंट, बीते दशकों में डिजिटल इकोनॉमी में भारत और अमेरिका के संबंधों को शेप करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय टैलेंट और अमेरिकी टेक्नोलॉजी ने इस क्षेत्र को नई लीडरशिप दी है और मैं मानता हूं 21वीं सदी में भारत और अमेरिका मिलकर इस डिजिटल युग का इंडस्ट्री 4.0 का नेतृत्व करने के लिए समर्थ है। साथियों, 21वीं सदी में नए अलाइनमेंट, नए कंपटीशन, नए चैलेंजेस और नई अपॉर्चुनिटीज बदलाव की नींव रख रहे हैं। ऐसे में भारत और अमेरिका के संबंध और सहयोग की 21वीं सदी के विश्व की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मेरा स्पष्ट मत है कि भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हम सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पीस, प्रोग्रेस और सिक्योरिटी में एक प्रभावी योगदान दे सकते हैं। आतंकवाद को हराने में अमेरिका के कमिटमेंट और प्रेसिडेंट ट्रंप की लीडरशिप मानवता की सेवा की है और इसलिए मैं मानता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जैसे विलक्षण नेता और भारत के अनन्य मित्र का इस देश का इस दशक की शुरुआत में ही भारत आना एक बहुत बड़ा अवसर है। बीते समय में भारत अमेरिकी संबंधों को सशक्त करने की जो शुरुआत हमने की है, अब उनकी इस विजिट से उसका अगला फेज शुरू हो रहा है। हम एक लॉन्ग टर्म विजन से इंस्पायर्ड है, सिर्फ शॉर्ट टर्म कंसिडरेशन से नहीं। हमारे बायलैटरल रिलेशंस ग्रो करेंगे, हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप का विस्तार होगा, हमारा डिजिटल कोऑपरेशन बढ़ेगा और मुझे विश्वास है कि हम नई ऊंचाइयों को पार करते हुए भारत जिन सपनों को लेकर के चला है, अमेरिका जिन सपनों को लेकर के चला है, हम मिलकर के उन सपनों को पूरा करेंगे। आज मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनके पूरी परिवार का मुझे स्वागत सम्मान करने का अवसर मिला है। मैं फिर एक बार नमस्ते ट्रंप का इस नाद को गूंजते हुए आप सबसे आग्रह करूंगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इंडिया यूएस फ्रेंडशिप, लॉन्ग लिव इंडिया यूएस फ्रेंडशिप, इंडिया यूएस फ्रेंडशिप। बहुत बहुत धन्यवाद। இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம Daddy, Locek, Mocek, Bacek.